हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग मेटा गेमर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग अभी जो लाइव बैठे हुए हैं तो वो मुझे पता है बहुत से लोग अभी आगे आएंगे भाईजान। इस साल तक कहाँ पे थे? तो भाईजान हमारा जो है ना कंप्यूटर हो गया था ख़राब। तो अभी जो है हम लोग भाईजान हमने एक नया कंप्यूटर तैयार करवा लिया है। अब हम लोग अपनी लाइव स्ट्रीम और वीडियोज़ दोबारा से शुरू करने वाले हैं। तो जो नए नए पुराने ओके, तो अभी हमारा भाई इशू बन रहा है। हम गेम की स्टार्ट करते हैं। अभी के साथ भाईजान हम लोग अपनी गेम का ज़रा सेटअप वगैरह कर रहे हैं। तो फिर देखते हैं आप लोगों को गेम शो वगैरह हो रही है कि नहीं। मुझे आप बस बता दें ताकि मुझे पता हो कि गेम मेरी शो हो रही है। तो अभी तक जो है हमारे पास सिर्फ ठीक है चैनली पैराबल जो है अब शो हो रही है, लेकिन स्क्रीन में थोड़ा इशू कर रही है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको होम में आते हैं और आने के बाद थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। और ओके, इसको इन गेम सेटिंग करके देखते हैं, शायद हमारा मसला जो है ये वाला हल हो गया। स्क्रीन वाला ऑप्शन वीडियो, ओके डिस्प्ले जो है वो हम करते हैं ये डिस्प्ले रख कर देखते हैं। अच्छा एस्पेक्ट रेशियो भी है, वाइट स्क्रीन वाइट स्क्रीन भी यहाँ पे चेंजेस तो हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इसको क्या कोई ओके बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ के सेटिंग में देखते हैं क्या इशू बना है। ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं अब हम। ओके अब जो है ये सेट हो गया है। हाय दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपना ये एक्स्ट्रा मिस किया है। अचीवमेंट्स को अनेबल कर देते हैं और सेव को अनेबल करेंगे ना करें, सेव को अनेबल करेंगे ना करें, अभी तक कोई हमें कमांड नहीं दे रहा। तो
अभी के लिए ना हम लोग ऐसा करते हैं, सेव को ना डिसेबल ही रखते हैं और बैक आके बिगिन द गेम को बिगिन करते हैं। तो दोस्तों जो गेम है ना स्टैनली पैराबल, भाई बड़े मजे की गेम है। इसका एक दूसरा पार्ट भी है, वो भी हम बहुत आगे जाके खेलेंगे, लेकिन पहले हम पहले पार्ट को खत्म करेंगे जो कि है स्टैनली पैराबल्स। अच्छा, अगर आपको इंग्लिश वगैरह नहीं आती है मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश में भी बता सकता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे ना ऐसा गेम है, मतलब कि इसमें इंग्लिश नहीं समझ आ रही, ये नहीं समझ आ रहा, तो वो सारा मैं आपको मतलब कि मैं करके दिखाऊंगा। वैसे मेरे साथ तो अच्छा, Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. अच्छा, Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. अच्छा, तो भजन स्टोरी सीधी है कि स्टैनली एक कंपनी में काम करता था। वो कंपनी में काम बड़ी देर से कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो क्या काम कर रहा है। तो मतलब कि इस तरह की इसकी स्टोरी है। अभी वहां और देखते हैं क्या पता है नरेटर में। अच्छा, गेम स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, हमने यहाँ से बाहर आ गए हैं। ठीक है, दरवाजे कैसे खुलते हैं? अच्छा, इसकी सेंसिटिविटी लो है, सेंसिटिविटी इसकी ओके करते हैं। और सेंसिटिविटी बड़ी लो थी, इतनी सही रहेगी मेरे ख्याल से। हाँ, इतनी सही है, इतनी सही है। All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. अच्छा, यहाँ से हमने बंद कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इधर। अच्छा, मतलब नैरेटर भाई हमें बता रहा है कि हमने आगे क्या करना है एक हिसाब से। ठीक है, तो ठीक है, नैरेटर ने कहा कि मीटिंग रूम में जाना। ये बंद कर दो ना, सारे बिजली जाए होती है यार, बिल शिल आते हैं यार। कंपनी का नुकसान तो नहीं ना करना चाहिए यार हमें। ये कौन छोड़ता है यार ये कंप्यूटर? ये देखो, ये भी चल रहा है यार। बंद किया करो यार। कैसे यार, कैसे एम्प्लॉय है यार, कैसे कोवर्कर है मेरे यहाँ पे? ये क्या, ये अच्छा, इसको मैं खोल सकता हूँ। Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. अच्छा, मुझे किधर जाना था? मीटिंग रूम में जाना था ना भाई। अच्छा, इसमें कुछ मिलेगा।
यार सेंसिटिविटी ज़्यादा तेज नहीं हो गई? हाँ ज़्यादा लग रही है मुझे, थोड़ा लो करते हैं यार हम। ये रही, इसको इधर इतना काफ़ी होगा। अच्छा अभी मीटिंग रूम का रास्ता किधर है भाई? ये तो दोबारा ठीक है। अच्छा हमने ना लिटरली यहाँ से भागना है। When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. अच्छा स्टैनली, मतलब कि मैं स्टैनली को गेम में अब मुझे लेफ्ट रोड में जाना चाहिए है ना यार? चैट मुझे बताओ मुझे कौन सी डोर में चाहिए, 1 लेफ्ट में के राइट में? वो कह रहा है लेफ्ट में जाओ यार। फिर हम करते हैं यार, हम लोग जाते हैं, हम राइट में जाएंगे भाई। हम यार हम इसकी बात This क्यों was माने not भाई? the correct way to the meeting room, वे and चुप कर Stanley रहे। knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. अच्छा इधर इधर से हम किधर जाते हैं? एम्प्लॉय लाउंज में, ठीक है। अच्छा इधर से हम चल जाते हैं एम्प्लॉय लाउंज में, ठीक है। Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. ठीक है, अच्छा ये रास्ता भी है। But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. अच्छा यार हम पता है करते हैं, हम लोग ना अभी इसकी बात सुनते हैं ना, देखते हैं ये हमें कहाँ लेके जाता है। And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. भाई ये नीचे जा रहा है कहीं पे, इसको भी बाद में देखेंगे यार। पहले हमें पता लगाना है यार कि एम्प्लॉयज वगैरह गए किधर है यार, ठीक है। Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. अच्छा अब मुझे बॉस के ऑफिस जाना है क्या? ठीक है, किधर है बॉस का ऑफिस भाई? ऊपर। Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. अच्छा बॉस का ऑफिस ऊपर है। ये क्या भाई, इतनी सुबह आई है क्या भाई? नजर ही नहीं आ रहा है कुछ भाई। अच्छा बॉस का ऑफिस ये है। अच्छा ये क्या, फिर तो नहीं, मेरे को तो जाना चाहिए। ठीक है दादा खुलता नहीं, ये नहीं है, ठीक है। Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? यार इधर लाइट नहीं है यार, लाइट नहीं, वीडियो ब्राइटनेस किधर है भाई? लैपटॉप पावर सेविंग, फुल स्क्रीन, एडवांस पे है भाई। अच्छा भाई सेटिंग में भाई हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this.
Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. यार ये माउस का सेंसिटिविटी होता है उसका फुल कर देते हैं। हाँ ठीक है, चल किधर है भाई? ठीक है, पीछे क्या है भाई? ये तो हॉरर गेम बनी जा रहा है यार। नीचे जाना मैंने क्या? नैरेटर बता ना भाई कहाँ जाना मैंने? अच्छा मेरे ख्याल से हम लोग ना एक कंप्लीट कर लिया। Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Hi. भाई किधर जाना यार मैंने? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape? नहीं भाई, अभी हम नैरेटर की बात सुनेंगे यार। ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे। अब किधर आ गया मैं? ये तो लाइट भी उठ रही है। ये लाइट पे लग रहा है। The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? भाई अब किधर जाना मैंने? अच्छा ये दरवाजा खुला अभी, ठीक है। अच्छा ये कैमरों का। Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. भाई मेरी जिंदगी एकदम सिमुलेशन है यार, धोखा है यार मेरी जिंदगी। अब मैं किधर जाऊँ? इधर जाऊँ क्या? दिल तो कह रहा है यहाँ से कूद के फिनिश कर दो अपने आप को। This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? नहीं, मैं किसी के दिमाग के कंट्रोल में नहीं था भाई। ठीक है, नैरेटर मेरी स्टोरी है, इतनी बुरी क्यों बना रहे हो यार? He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. हाँ मैं नहीं मानता भाई। Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? अच्छा अब मैं किधर हूँ भाई? इधर जाना, इधर ठीक है। But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in,
Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. चलो ऐसे हुआ ये भाई, कैसे खत्म होगी, कैसे तबाह होगी ये मशीन। भाई गेम को हम सेव में ना करें यार, सेव पे डालते हैं यार, सेव पे डालते हैं भाई, अचीवमेंट भी अनेबल करते हैं भाई, क्या कर रहे हैं। And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. ओके चैट, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो चैट में भी सिर्फ एक ही बंदा देख रहा है। हाँ भाई बताओ यार क्या करें यार, आप ही देख रहे हो, बताओ ऑन या ऑफ। जितना हम यहाँ पे ऑन देखेंगे या ऑफ देखेंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। ऑन मतलब कि हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए फंस जाएंगे, ऑफ मतलब इस जगह को हम तबाह करके अपने आप को भी खत्म कर देंगे। तो जल्दी से बताओ भाईजान यहाँ पे हम क्या करें। ओके तो भाई आपका मैसेज है ऑफ, तो भाईजान हम यहाँ पे ऑफ करने लगे हैं। क्या हुआ भाई, ओ ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, गेम ऑफ हो गई। Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. साथी भाई साहब हमें आजादी मिल गई यार। His. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. अच्छा ये मतलब कि भाई ये आजादी है भाई, ये तो बड़ी छोटी एंडिंग थी ना यार। Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. ठीक मतलब कि भैया नैरेटर हमें जो ना हमें एंडिंग तक तो ले गया है, तो अब हम लोग जो करेंगे हम नैरेटर की बात नहीं मानेंगे, ये देखिए दोबारा से स्टार्ट होगी गेम, ठीक है ओके। All of his co-workers were gone. What could it mean? चुप कर जा भाई, मुझे बोल रहे decided थे। to go to the meeting room. दोस्तों अब हम पता ही करेंगे, हम लोग ना इसकी बात नहीं मानेंगे, हम लोग ना जो ये कहेगा ना उसका उल्टा करेंगे, देखते क्या होता है। क्या मतलब कि हम कोई और फंस जाते हैं, हमें कोई और मतलब कि कोई और जगह की एंडिंग मिलती है, क्या हम स्पेस में चले जाते हैं, या फिर हमें ये बंदा मिल जाता है। यार कितना औसम होगा यार अगर हमें ये बंदा मिल जाए, ये बोल रहा है हमारे कानों में, इसको मतलब यार दो लगाएंगे यार, क्या बोली जा रहा है यार, चुप तो कर जा यार, तो चुप नहीं करता यार एक तो ये। तो अभी हम लोग ना इसको करते हैं, और यार अभी तक जो लाइव स्ट्रीम में आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर लो यार,
हम लोग ना अभी अपना दोबारा से साइकिल शुरू करेंगे, अपलोड्स भी करेंगे वीडियोस। अभी तो लाइव है आज, ठीक है। एक दिन बाद आपको अपलोड्स भी मिल जाएंगी, फ्री फायर की, पबजी की, कॉल ऑफ ड्यूटी की भी मिल जाएगी, ठीक है। बैटल गेम्स की आपको बहुत ज़्यादा अपलोड्स मिलने को यहाँ पे मिलेगी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो यार, क्यों नहीं कर रहे यार। Perhaps he had simply missed a memo. अच्छा ठीक है भाई, बिजली यार, अब हम वो बिजली वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलता है चलने दो, चलता है चलने दो, रुकने का नहीं, ठीक है ठीक है। ओके, अब हमारा पहला ऑप्शन कहाँ पे था हमारे पास, यहाँ पे। When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. यार पहले हम ना राइट गए थे, लेकिन वो हमने इतना कुछ किया नहीं था, वो जरा हॉरर एंडिंग थी, लग रही थी मुझे हॉरर, लेकिन हमने ना लिया नहीं राउट। तो हम लोग ऐसे करते, अब इसकी बाद में राइट में जाते हैं, देखते हैं राइट हमें कहाँ पे लग जाता है, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ठीक है, राइट यही है, ठीक है, राइट यही है। Yet there was not a single person here. अच्छा भाई, पता, चुप कर जा यार, चुप कर, जनरेटर चुप कर जा। Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find. Coming to a staircase, Stanley walked भाई upstairs नीचे to वो his पार्किंग boss's वाला भी office. होता है ना, ठीक है भाई। फुल टाइम हॉरर भाई, हॉरर भाई, क्या दिक्कत दूर दिया यार। ओके, But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. वे He चुप might कर, be मैं ही fired डरता for उससे, that. And in वो such a तो था भी competitive नहीं। economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. अबे All of my ये co-workers क्या हो रहा blinking है? mysteriously out of existence in a single moment for no reason. वो हैंग हो गया भाई। भाई इसको क्या हो गया अब, मुझे लगता है गेम में ही कोई है भाई। ओ हाय। यार दोस्तों, अभी जो है ना ये स्टैनली पैरालेबल यार, इसने हमारा ना गेम क्रैश कर दिया था, तो हम लोग ना इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अरे हम क्या करते हैं ना, इसको किधर गया, स्टैनली पैराबल्स डॉक्यूमेंट्स किधर गया था भाई, किधर रखा था, ये रहा भाई। स्टैनली को ना हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं एक बारी, ठीक है। और गेम कैप्चर को हम लोग सेट करते हैं, ये स्टैनली पैराबल स्टार्ट हो गया है।
I, you know what? Even if you were doing to be sarcastic and ironic, I think you should still act as though it was personal in order to lead this kind of emotional stuff. Right? Yeah. So let's just say. So let's just say it was yeah. I know that you're not me. It was like, you know, because I wanted to put तो अभी जो है ना दोस्तों हमारा जो ये ना स्टैनली पैराबल्स जो है फिर से हो गया है स्टार्ट के कोई इसकी सेटिंग में थोड़ा इशू है सेटिंग को ओके करेंगे पहले भाई ठीक है इसका चेक कर लेंगे पहले ओके अब जो है ना ये एकदम कड़क सेट हो गया है गेम को हम लोग भाईजान बिगिन द गेम के बाद शुरू कर लेंगे यार इतना तो हम आगे भी नहीं गए थे जब वैसे वो एंड वाला ना यार उधर हम नहीं जाएंगे उधर मेरे ख्याल से ना कोई इन्होंने बनाया हुआ है लैग वाला या हो सकता है उधर कोई ऐसी चीज हो स्किप करना है हमने सारी स्टोरी देख ली है हमने इसका एंड भी कर लिया है ठीक है यार अब हम पता ही करते हैं हम लोग ना कोई और रास्ता देखते हैं भागने का ठीक है When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a भाई हो गए यहाँ से भाई हम हो but गए eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ना भाई अब हम इधर नहीं जाएंगे हम लोग क्यों जाएंगे Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. अब मैं किधर जाऊँ नीचे जाऊँ भाई सेव होना है इसका सेव चेक करेंगे पहले यार सेव क्यों बार बार डिसेबल होता है यार Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. भाई कौन हार This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. कौन है भाई वो यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार हम शरीफ बंदे हैं यार ऐसा नहीं करते तो पे किधर है That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can... हेलो हेलो Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. अबे Gotcha! अरे यार काट रहा है यार मेरा ये Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to तेरे make a पर point मैंने here, मारना ही नहीं Stanley. चल लेकिन I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. नहीं मैं नहीं अंदर जाना Sorry, but you're in my story now. नहीं भाई मेरे को नहीं अंदर जाना यार पता नहीं कौन सा भूत बगले में उठा के फेंक दिया यार इसने नरेटर ने कोई पुतले का क्या This करूं is a very sad story about the death of a man named Stanley.
अबे नहीं भाई, मैंने दोबारा, मैं क्यों तेरी बात मानूं? ठीक है भाई, दोबारा देता हूँ। Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of भाई him. यार ये मेरे से वाकई में Every button कीबोर्ड that पे he यार बड़े pushes से बुआ रहा is a यार अब। reminder of the inconsequential nature of his existence. भी तो हूँ क्या? Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now मैं नहीं खा रहा, he's going home. मैं नहीं जा रहा। He's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. अच्छा भाई, मुझे ना लग रहा कि ना इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज है और मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो चेक करें तो क्या इशू है। ओके डेस्कटॉप, हेलो हेलो। ओके, इसको हम थोड़ा स्लो करते हैं जहाँ तक हैं, और वापस आ जाते हैं हम गेम में। अब पता नहीं आवाज़ हुई है कि नहीं। And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. भाई अब मैं कैसे निकलूंगा बाहर? So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. ठीक है भाई, अब नहीं मैं करूँगा भाई, बोलो। ठीक है, नहीं करता। भाई घड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है भाई गेम में? वो तो कुछ नहीं रहा भाई, मुझे अभी बोला कि ना भाई यार, मैं दोबारा यार कैसे दूंगा यहाँ से? You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself?
I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I ये क्या हुआ भाई? मैं मर गया? ओके, मतलब कि अभी हमने ना एक एंडिंग खत्म किया, ठीक है। मेरे ना दिमाग में एक चीज आ रही है, अगर हम वहाँ पे फोन के अलावा और भी कोई ऑप्शन हो सकते ना, हम लोग कहते तो उधर हम वापस जाते हैं और ना, मतलब अभी तो ये जीत गया ना, अगली बार इसको नहीं जीतने देंगे ना। When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. अभी तो ये जीत गया ना, अगली बार इसको ही जीतने देंगे ना। Stanley came to a set. Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. कौन सा ओपन डोर? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. हेलो भाई, हमें कोई डायरेक्शन का नहीं है, अभी यहाँ से कूद के अपने आप को मार दूंगा, चुप कर जा। I'm not sure. नैरेटर कहीं का। I realize that investing in your trust in someone else can be difficult. अगर हम उधर कूदते हैं, Nothing but you. ये भी एक रास्ता है। Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. भाई ये कोई जगह आ गया अब। Through the red door. नहीं भाई, मैं रेड डोर से जाता, मुझे लाल पसंद नहीं है। Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. नहीं, मुझे रेड पसंद नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. No red door, only blue door. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see, there's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. भाई नई गेम है क्या? ठीक है, खेल लेता हूँ। Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? तू मेरा दिमाग खा रहा है, इसलिए वन दिया। Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look.
अब क्या है? स्टैनली पैराबल वाइल्ड वर्ड, ठीक है, लीडर बोर्ड डाल दिया, ठीक है। अब आगे दिखा क्या है। Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. भाई मैं पता करता हूँ, इसको हर बार बार नहीं दूंगा यार। I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some play testing. You wouldn't mind taking a look at it, would you? हाँ ठीक है, ले आ। Boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. मतलब क्या कर रहे थे, ये करता रहो भाई, खुद ही कर, जा जाके जला दे इसको आग में, मैं पागल हूँ। You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? क्या भाई सही आइडिया यार, कर कोई और गेम का निकाल, कौन सी पड़ी है? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. भाई माइनक्राफ्ट, भाई ठीक है, ये माइनक्राफ्ट है ये। Ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. भाई छलांग कैसे मारूं इसमें? Only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. बना हाउस, बना, किधर बनाएगा? This will go here. No, here. And then... भाई क्या नूब है यार, नूब वाला घर बना रहा है। Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. ज़्यादा तो I खोल। made this standing. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. अच्छा मैं अंदर जाऊँ यार, छलांग मारने का सिस्टम ही नहीं है यार। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं। Grand. Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. ठीक है, डायमंड कितने मिलेंगे अब? भाई केव यार, ठीक है, Oh, डायमंड कितने मिलेंगे? looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? नहीं भाई मैं नहीं लाया यार। यार एक तो ना इसमें मैं छलांग नहीं मार सकती, मैं छलांग में हूँ। No. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. अब क्या भाई, अच्छी खासी माइनक्राफ्ट खेल रहा था यार, अब क्यों चेंज कर दिया? कोई और गेम लगा रहा है? लगा। सही है। Yes, I don't even know what this game is, but I love it. ओ भाई ये पोर्टल है यार। Box with no way out.
listening to me talk. Oh, it's inspired. अरे ये पोर्टल है भाई, पोर्टल गेम है क्या? What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. But Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. भाई ये ठीक है भाई, ये भी यार, ये भी हम खेलेंगे भाई, इसको प्रॉपर एंड करेंगे, ठीक है ना? अच्छा आगे क्या? No, actually, you know what? अबे अबे अगला लेवल खेले थे ना। Stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the. ले चल निकल बैक रूम में। अरे किधर आ गया मैं? अबे ये मतलब गेम की पिछली स्टेज है यार। इधर कुछ नहीं है, क्या है इधर क्या? ओके अच्छा मैं गिरी जा रहा हूँ भाई, ये तो बिल्कुल हॉरर है यार, हॉरर। ठीक है अच्छा मुझे लाइट नजर आ रही, ठीक है। किधर आ गया भाई? वापस चलते हैं। और नरेटर भाई, I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. ठीक है भाई, नरेटर वेट कर ले, मुझे तो खेलना है ना। ये क्या, ये भी कोई एंडिंग है भाई गेम की? मतलब कि हम लोग कोई बैक स्टेज में जाके गुम हो गए हैं भाई, ठीक है। पता नहीं ये एंडिंग है। ओके ये एंडिंग थी, ठीक है एंडिंग थी। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हम लोग ना इससे ना हमने वो पहले वाला बदला लेना यार, जो इसने हमें उल्लू बनाया ना। Constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it. भाई हम लोग ना रश करते हैं, रश। Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. इससे ज्यादा मुझे लग रहा ना भाई, यहाँ पे भी कोई ना एक रास्ता था, लेकिन अभी हम लोग ना इससे वो पहले वाला बदला लेंगे ना। Following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Look, Stanley, तो मुझे वो नीचे नजर आ रहा है, वो भी कोई रास्ता वगैरह है क्या? Really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be अगर difficult. हम किस्ता नीचे उतर सकते ना यहाँ से। It's been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. तो यार ये ना इसने हमें पहले भी इस तरह हमें उल्लू बनाया। To redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your चल life. अब लेके अब देखो मैं इससे क्या करता हूँ, तो मोबाइल को तोड़ दूंगा यार। That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To इधर कुछ तो होगा ना यार, कि इसको मैं कर सकूं यार।
Then बल्लभ pick बल्लभ up the उतार सकता हूँ क्या? phone. नहीं यार वहाँ तक हाथ ही पहुँच रहा है। अरे इसको ये क्या तार? इसको मैं उतार सकता हूँ क्या? As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Yes. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? भाई मैं कर सकता हूँ। Chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. हाँ मैं मैटा हूँ। I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. हाँ And to think I've जी। been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the ठीक है भाई, अब गेम हमें बता रही है कि फैसले कैसे करते हैं। most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30?" अब मैं प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। My goodness, it is 4:30. कर लिया भाई प्रैक्टिस, आगे बताओ। Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do Bye. you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. ठीक है भाई, मुझे समझ आ गया यार। चॉइस अपनी मर्जी नहीं मारते, सही फैसले करते हैं। सेकंड बैरियर वगैरह के लोग हैं भाई। Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality.
चलो भाई वापस चलते हैं यार, चलो। Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. भाई मेन चीज पता क्या, इस बंदे ने ना हमें बड़ी बेइज्जती किया यार हमारी। हम क्यों इसकी बात माने? चल निकल। No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. ये बांध दिया है, इधर जाना पड़ेगा। ठीक है। It's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so बदला। special about seeing the game undone? जब बदला मिला है, बदला। Well, it's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. कर दे भाई शट, तू कर बंद गेम को। दोस्तों गेम बंद हो गया लगता है। I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly. क्या हुआ भाई अब? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. भाई इसको क्या हुआ?
दोस्तों इसी तरह हम लोगों ने गेम को जो है ना के बड़ा तंग कर दिया है, तो आज के लिए यार इतना ही बस। और बहुत ही जल्द हमारी एक वीडियोस वगैरह भी आना शुरू हो जाएंगी फ्री फायर की और पबजी की तरह की। तो अब वो जानना चाहते हैं कि भाई हम फ्री फायर पबजी हम कैसे खेलेंगे, वो मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूँ। तो भाई हम लोग जो है ना अपने मोबाइल को लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने कंप्यूटर पे, जैसे कभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा मोबाइल जो है अभी इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। इसको हम सेट कर देंगे फाइल ट्रांसफर पे। भाई ये बताना इसलिए कि भाईजान आप लोगों को पता हो कि हम लोग जो है ना कंप्यूटर गेमिंग या पैनल पर वाली गेमिंग हम नहीं करेंगे, हम करेंगे मोबाइल वाली गेमिंग, सिंपल मोबाइल वाली गेमिंग। तो पहले हम जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर्स में। ओके, वो आप लोगों को डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा, रुके मैं डिस्प्ले करता हूँ। इसको बंद करते हैं और इसको ऑन करते हैं हम लोग। ओके, तो इधर आके हम लोग आएंगे न्यू फोल्डर में। न्यू फोल्डर में आने के बाद हम आएंगे प्रोग्राम में, नहीं प्रोग्राम नहीं था, इसमें आएंगे हम स्क्रैपी नहीं है इसमें, प्रोग्राम नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये आ गया स्क्रैपी। तो भाई हम लोग जो है ना अब हम लोग इसके थ्रू जो है ना अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह किया करेंगे। मतलब कि मोबाइल को हम लोग अपने मोबाइल कंप्यूटर पे शो करके इसको हम करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं अभी मेरा मोबाइल जो है इसके कंप्यूटर के ऊपर कनेक्ट है और इसको हम अभी इसको डाल देते हैं, हम डिस्प्ले में इसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक वीडियो यहाँ से नहीं पकड़ सकते, ठीक है, हम पकड़ देते हैं, इससे पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे शायद, हाँ ये पकड़ लिया है। और इसको हम हाइड कर देते हैं। अभी जो है ना हमारा इसको हम सेंटर पे लाते हैं ताकि आपको पता हो। तो हम लोग भाईजान फ्री फायर खेलेंगे अपने मोबाइल के थ्रू। कहाँ गया फ्री फायर? हुआ है फ्री फायर, हो जा। अच्छा इसको हम जरा ऑफ कर देते हैं, अलर्ट्स को ऑफ कर दें। अभी जो है नेट थोड़ा इशू कर रहा है मेरे मोबाइल पे, तो हम लोग ये जो है मतलब आपको बताने के लिए हम मोबाइल गेम्स किस पे खेला करेंगे, फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह इस तरीके से, ताकि आपको पता हो कि भाई हम जो खेल रहे हैं मोबाइल्स पे खेल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं अपनी नई लाइव स्ट्रीम में, हम खेलेंगे फ्री फायर। वैसे आज ही करेंगे वो लाइव स्ट्रीम, कोई 6-7 बजे वो लाइव स्ट्रीम करेंगे हम फ्री फायर की। तो ज़रूर आना और देखना हमारी फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम। तो बाय। और हाँ मुझे पता है आप लोग बहुत से कह रहे होंगे भाई ये तो उसका नहीं है जो आपने पहले खेला था, देयर इज नो गेम। तो भाईजान एक्चुअली मैंने गलती से दोनों को थंबनेल और टाइटल स्वैप हो गए हैं,
तो अगर वो गेम देखनी है तो स्टैनली पैड लेवल वाले पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको स्टैनली पैड लेवल का उस पे आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा, और इस पे आपको भी स्टैनली पैड लेवल का पहला पार्ट मिला है, दूसरा पार्ट आपको वीडियो में मिलेगा। इसके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और हम लोग फ्री फायर का टूर्नामेंट भी लाजमी कराएंगे, तो लाजमी याद रखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना। आज के लिए इतना ही, टाटा।